बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुशर्रफ ज़ैदी है और आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ तबादलाब के इस सिलसिले पर जो हम पिछले चंद महीनों से हमने शुरू किया। और पिछली किस्तों में हमने बात की तालीम में जो इस्लाहाती अमल किया गया और उसका क्या नतीजा निकला। हमने सोशल प्रोटेक्शन पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास जिसको बाद में प्रोग्राम बनाया गया उसी का उस पर जो काम हुआ, एक बहुत बड़ा इस्लाहाती अमल था पाकिस्तान की तारीख़ में। आज जो हम आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं वो है लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम। अच्छा, ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पर एक इस्लाहाती अमल था जो 1993 में शुरू हुआ। और उस वक्त जो थिंकिंग थी, इसके पीछे जो मोटिवेशन थी, वो ये थी कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे मैटरनल और नियोनेटल या चाइल्ड हेल्थ पर बच्चों की सेहत और होने वाली माओं की सेहत, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनकी सेहत पर बहुत कम जोर दिया गया था और पाकिस्तान बहुत पीछे जो है रह गया था। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के साथ मुंसलिक बड़े बड़े नाम हैं और लोग हैं, उनसे हमने बात की, समझने की कोशिश की, कुछ चंद लोगों का इंटरव्यू भी किया। तो इस इस्लाहाती जायज़े में आज लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम पे जो हम गुफ्तगू शुनीद करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे, उसमें हम एक्सपर्ट से भी पूछेंगे कि क्या इसकी बड़ी बड़ी सक्सेसेस हैं, कैसे ये एक दुनिया के बड़े प्रोग्राम्स में शुमार इसका होने को हुआ और आगे जाते हुए इसमें बेहतरियाँ या जो इसमें गैप्स है उनको कैसे कवर किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप भी इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। मैं ख़ुद जो है मैंने बहुत कुछ सीखा, इसकी जो प्रेपरेशन थी और तैयारी थी उसमें मेरे कॉलीग्स ने भी। उम्मीद है आपके लिए भी ये जो है बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा और इससे हमारा जो जज्बा और जोश है आने वाले दिनों में बेहतरी के लिए वो थोड़ा बहुत शायद रिन्यू हो। तो बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आगे देखते जाएंगे। '88, 1988. Elections take place in Pakistan after 11 years of dictatorship and military rule. Pakistan develops to constitutional rule and a democratic order is reinstated in Pakistan. Now, when the elections were held in 1988, as you know, Benazir Bhutto had come back in 1986, and she was the most important and significant leader. Frankly, at that time, I would say, of any third world country, emerging through a very difficult struggle for the restoration of the democratic rights of the people. So prior to the election, as you know, every party has a manifesto. And the manifesto has to represent what the party's vision, aspirations, and commitments to the people are. The Pakistan People's Party manifesto work started as far back as 1986 when she came back. When she arrived in Lahore on the 9th of April 1986 to Manchus working. Subsequent to that, she immediately embarked on country tours and on meetings with various groups of people. She constituted the social sector working policy group, and I was a member of it at that time. And in the health sector, we had several very good minds around the table, and we looked at what were the reasons why this concept of universal healthcare for all had not been able to take root in Pakistan, the welfare of the people. So clearly, what emerged from our analysis was that Pakistan's healthcare system is it's a very, what should I say, situated system, located system on fixed facilities. And obviously, they catered to a population which had to travel sometimes 15, 20, 30, 40 kilometers to get to it. So imagine a woman in a stage of pregnancy, let's say an emergency delivery, or a child very ill, or a person or a man ill, or an elderly. How do they get to that basic health unit?
And it really doesn't have many curative facilities either. So we said, well, we should have an outreach program. And we looked at other countries. Stems from the experience of barefoot doctors in China, then barefoot workers in Iran. In Iran, this program was there from the 70s, after, Castro took over Cuba. And this was the mainstay of what he did in that island for primary care. My own understanding is that this program was really formally launched in 1994 after Benazir came back from the Cairo population summit. And this was then nurtured in that early year or two with her support and political guidance through the efforts of Mubashir Sheikh. And Mubashir had a terrible time at that time because the Ministry of Health and all the health fundos, did not really want any other cadre of ancillary workers. And to Benazir's credit, this program was nurtured and put in place. The people, particularly the rural and remote areas. So that's where the idea of the fact that there should be a health worker who is easily accessible to the community, in fact, belongs to the community. So the features that you see today of the Lady Health Workers program go far back into that time. And the Lady Health Workers were recruited, 10,000 LHWs were recruited at that time. And their task primarily was to build awareness about preventive health, primary health, and promotive healthcare practices. So they talked about food, sanitation, hygiene, and very importantly, they talked about immunization. मेरे पास है मल्ला पीरों वाला। हम इस इलाके में लोगों की सेहत के बारे में बताते हैं, माँ और बच्चे की सेहत, बुनियादी सेहत, और डेंगू के बारे में, टीबी के बारे में, छाती के कैंसर के बारे में। अब ऐसा है कि हम हर घर जाते हैं, बच्चे का वज़न करते हैं, माँ को ग़िज़ा के बारे में बताते हैं, बच्चे को हिफाजती टीकों के बारे में बताते हैं और लगवाते भी हैं। जो नहीं जाती हैं उन्हें हम लगवाते भी हैं, साथ लेके जाते हैं। So they were a very critical healthcare worker that the family accepted. They knew the woman was from their marriage and that she would be there to help the wife in her pregnancy. She would be able to actually assist in ensuring that the woman had safe delivery and safe pregnancy. It was a fairly, I would say, realistic agenda that the lady health workers had in the beginning for family planning. So family planning was not really addressed for a long, long time. इसी तरह प्रेग्नेंट लेडियाँ हम उनको कहते हैं फौरी तौर पे अपना कार्ड बनवाएं, अस्पताल का कार्ड बनाएं। बस दफ़ा कोई मसला हो जाता है तो कार्ड बना होता है, वो फ़ौरन हॉस्पिटल चली जाती है। इसी तरह जिनके 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं हम उनको कहते हैं मनसूबाबंदी करें। ज़ाहिर है हम ये नहीं कहते कि बच्चे बंद करें, हम कहते हैं थोड़ा सा वक्फा करें जिससे माँ भी सेहतमंद और बच्चा भी सेहतमंद। उस वक्त मसला ये था कि फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम हमारा काफ़ी स्लो चल रहा था। हमारे पास कॉन्ट्रसेप्टिव यूज़ जो था वो 10-11% की रेंज में था। तो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ, दैट्स वेयर इट वाज। बाय 2001 8 साल बाद कॉन्ट्रसेप्टिव यूज़ ऑलमोस्ट 30% तक पहुंच गया था, एंड दैट वाज ऑलमोस्ट ऑल on the back of the Lady Health Worker program. That was the only effective intervention. We've done the largest number of trials with these lady health workers, and almost every study that we've done we've shown benefits of lady health workers. हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के सबसे पसमानदा 10 डिस्ट्रिक्ट्स में नाफिज किया गया था। उसका बैकबोन लेडी हेल्थ वर्कर्स। We worked through the primary care program, और we didn't work. गवर्नमेंट का अपना प्रोग्राम था जिसको हमने सपोर्ट किया थोड़ा सा, and we gave them did some hand-holding, and we've demonstrated that you can reduce perinatal mortality, newborn mortality, child mortality in areas where lady health workers were working by about 25 to 30%, at least 2 to 3 times faster than the secular rate of reduction in other well-developed districts of Pakistan. So we know that this program, if well implemented, can reduce mortality. Can it reduce it to the extent that you will gain the Sustainable Development Goal targets? Can these lady health workers substitute for what needs to happen in hospitals, in districts? I mean, women dying of hemorrhage, women requiring cesarean sections, newborn babies requiring resuscitation. Of course they cannot do that, because their role is primary care. Their role is prevention. Their role is encouraging women to have antenatal care, family planning, to get to hospitals for deliveries,
and to promote infant nutrition and breastfeed. ये सारी चीजें लेडी हेल्थ वर्कर्स करती हैं, कर सकती हैं और बहुत अच्छी तरीके से. You know, I would say 1999, 2000, this program was under threat because the World Bank, which had been bankrolling this program with something like 30,000 lady health workers, principally wanted to kill it. And I was part of a group that was asked to formally review this at that time and present our findings to Ijaz Rahim. So, you know, it's a long story as to how the Lady Health Workers Program survived those initial turbulence. They would not have come to review this and then provide recommendations to the Health Ministry at that time. And the Federal Health Secretary at that time was Ijaz Rahim. And I remember as to how, you know, I'm going back a long time, as to how the Planning Commission, people, and I'm not going to name any names actually. So the Planning Commission health chief at that time came to that meeting with the full intention of absolutely killing the program. So some of us, you know, tried very hard, and many of the people involved at that time are still around. So, you know, it's not a hidden, you know, a secret that this program was very fragile in its early few years. It was launched, and there was a famous health minister, not a People's Party health minister, who actually wanted to stop it, and he was persuaded to go. He would speak to Zafar Mirza at some stage, persuaded to go and actually see the program in a clandestine fashion in Punjab, to see what these girls were doing. And he was persuaded enough to come back and say, okay, leave them alone. So the early few years of the program, before a lot of internal funding at the right level, now it may be that the bank provided what they call budgetary support to the government and not directly to the program, but that budgetary support was critical for the program to function, because there was hardly any fiscal space in those early years for this program to be a standalone program. And I've just told you the Ministry of Health was not very supportive of this additional cadre of workers. They still are not. I mean, you know, one of the biggest challenges that I have is there are all kinds of people at different stages who threatened to kill this program. When the PTI government came, one of the first things on the table was, how can we get rid of lady health workers? And you know, Punjab declared them a dying cadre. Still does. It became a victim of its own success. उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड की गई to the point कि वो by 2008 उनके JDs में 22 चीज़ें ऐड कर दी गई. Over the years, the leading health workers have been cultivated to many other responsibilities. Many provinces have corrected that now, but initially, the LHWs here, the polio workers, the LHWs are often asked to be part of, they have to get involved in election. They serve at the election booths. They have to deliver just about any program that has been delivered to the villages, then given to an LHW. So हमने एक किस्म का एक वो कहते हैं ना, वो एक जब्बार बर्दारी का जानवर बना दिया इसमें, जिसपे सारी चीजें लादी जा रही हैं. हर नई चीज जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स के कंधे पे डाल रहे हैं. तो मैं यही कहता हूँ कि आप नई चीजें डाल रहे हैं अगर लेडी हेल्थ वर्कर्स पे, या करने को, या उनकी ट्रेनिंग बेहतर कर रहे हैं, तो वो चीजें निकालें जो कि फायदेमंद नहीं है. कई चीजें ऐसी लेडी हेल्थ वर्कर्स के करिकुलम में जो कि मेरे ख्याल में ऐसी नहीं है जिनकी वजह से लेडी हेल्थ वर्कर्स को अपना सारा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बल्कि बाज़ हमारी अहम चीजें ऐसी हैं कि जिस पर उनको ज्यादा जोर देना चाहिए और हेल्थ सिस्टम को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. अगर हेल्थ सिस्टम लेडी हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट नहीं करेगा तो सिर्फ अपनी बजाते खुद एक एडवोकेसी से या इंकरेजमेंट से तो वो नतीजे नहीं दे सकती हैं जो कि दीगर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम्स दे रहे हैं. उसका नतीजा बड़ा क्लियरली न्यूमेरिकली नज़र आता है कि 2008 में जब उनकी जो नेशनल असेसमेंट हुई तो फैमिली प्लानिंग के ऊपर उनका इफ़ेक्टिवनेस सिर्फ 5% रह गई थी. मतलब ये है कि अगर एक इलाके में लेडी हेल्थ वर्कर नहीं है और एक और इलाके में है तो लेडी हेल्थ वर्कर की वजह से सिर्फ 5% इंक्रीज़ इन कॉन्ट्रसेप्टिव यूज़ एंड 5% 6% इंक्रीज़ इन बच्चों की वैक्सीनेशन जो टीके होते हैं उसका यूज़ नज़र आ रहा था. 10 साल बाद 2018 में एग्जैक्टली वही सूरत हाल रहती है, वही 5% एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम हो रहा है. लोगों के पास हम जब जाते हैं तो बड़े मिसाइल हमें
आते हैं। पहले तो लोगों ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया, अब लोग हमारे जो है ना आदी हो गए। तो हम तो जब भी जाते हैं लोगों को सेहत के बारे में, ज़्यादातर माँ और बच्चे की सेहत के बारे में और डेंगू के बारे में ज़्यादातर फोकस करते हैं। मैंने देखा है कि ये तो इतना मुश्किल काम है, इतना ज़्यादा लोग तो अंदर घुसने नहीं देते। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनानी शुरू की, अपने रवैये से, अपने अदादो इतवार से उन्हें कहा कि मैं आपकी बहन हूँ, आपकी खैर ख्वाही के लिए आई हूँ, आपके बच्चे को वज़न करने आई हूँ, आपके बच्चे को टीका लगाने आई हूँ, कोई हमें दवाइयाँ मिलती है वो दवाइयाँ देने आई हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मैंने ना अपने साथ मिला लिए। बड़ी बड़ी मुश्किलात आई हैं, बारिशें हो जाती थी, रास्ते ख़राब हो जाते थे, धूप तेज़ हो जाती थी, हमें बुखार हो जाता था कभी क्या, लेकिन हमने अपनी जस्तजू छोड़ी नहीं है, तको जारी रखी है। अब हम उस मकाम पे आ गए हैं कि लोग हमारा इंतज़ार करते हैं। When the entire discussion, the 18th Amendment started, and the health sector and the education sector, population sector was completely devoid to the process. A very significant change. And I think absolutely the right thing for Pakistan. This over-centralized, overly dominant federal bureaucracy and federal decision-making structure, and the federation taking decisions about a small village in Lodra or in Pohar or in Jigawabad. It doesn't make sense at all. How can people say, I've been in the federal government myself 3 times, and I don't think it's right. Nor is it judicious, nor is it practical, nor should it be done. That sitting in Islamabad, you take decisions about where a clinic is to be placed and how many lady health workers there have to be. This is all not even provincial work. This is district level work. You've got to get close to the citizens, to the families, to the villages. I've done the analysis. अगर आप देखें तो डेवोल्यूशन के बाद हमारे कई इंडिकेटर्स में you see कि जिन provinces ने डेवोल्यूशन को seriously लिया है, taken the planning themselves and the accountability themselves, they have done very well. I mean, some of the best performances are in some provinces around devolution. Others have not done as well, but they have still got to a better stage than where they were. So I have no doubt about it. I think the democratic process of devolving health to the provinces was a good idea. नतीजा देख लेना कि आप स्किल बर्थ अटेंडेंस की बात करते हैं कि जो लोगों को जो डिलीवरी होती है वो कहाँ पे होती है, वो घरों पे हो रही थी. एंड आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2006-07 का जो DHS था उसमें कोई हर 10 में से 6 डिलीवरीज घर पे हो रही थी. डेवोल्यूशन के बाद 2017-18 में 80% डिलीवरीज जो होती हैं वो हेल्थ फैसिलिटी में हो रही हैं. मोस्ट ऑफ इट coming out of Punjab, a deliberate decision of the Punjab government to do certain things to promote that, right? उस devolution के social indicators पे तो बहुत फ़र्क पड़े हैं, लेकिन and that's not complete. I mean, that has to go down to the district level. पहले से बहुत बेहतर हो गया है. पहले हमें ट्रेनिंग कम मिलती थी, अब ट्रेनिंग दे रहे, सहूलतें भी दे रहे. इससे अच्छे भी इंशाल्लाह हम आगे करेंगे. अगर हमारी ट्रेनिंग देते रहे, हमें सहूलतें देते रहे, दवाइयाँ देते रहे, लोगों को देने के लिए लोगों को सेहत के बारे में बताते रहे. हमें ट्रेनिंग करेंगे तो हम आगे ट्रेनिंग देंगे, लोगों को बताएंगे. But when the devolution and the amendment came, the 18th Amendment came, in those years, the lady health workers, perhaps feeling uncertain and insecure, felt that they should become officially recognized as a cadre of government workers. Prior to that, they were not government workers. It was a program that was funded by every provincial government and the federal government. But they didn't have a grade 10 or 11 or 12 or 14, 16 positions, great positions in government. There was no security of employment. They didn't get pension, they didn't get health benefits and so forth. So I can understand that, and that the lady health workers and also organize themselves, they unionize themselves. And they spoke from one platform, and I think, if I'm not mistaken, the leader is a remarkable one called Bhutta. And she said that we want our rights, and our rights are that if this program is so important, to put up on it regular workers when I make a good salary, say, give us security.
I'm a bit double-minded about that. Actually, I was perhaps the only dissenting voice in that committee that made the decision to make them all government workers, because I felt that it struck at the very root and foundation of the design, that they're actually community-based workers. Once you make them government workers, now what do they want? They want promotions. And whether they deliver or they don't deliver, there's no performance criteria. So you can be a lady health worker for 10 years, 15 years, 20 years, and just continue. Like in government service, you just continue, whether government delivers anything or it doesn't deliver, right? If 30,000 schools in this country are not functional in the public sector, has anybody been fired? Remote? There's no performance accountability. So I do feel that that should not have happened, or haven't I? Another alternative could have been found. But regardless, still by far the best outreach program. Over time, जो एक गलती की है हुकूमत ने, वो एक तो इनको रेगुलराइज कर दिया गया, इनको सरकारी नौकर बना दिया गया, which means that a lady health worker who was 20 years old about 20 years ago is now 40 years old. And therefore, जिस किस्म की एज ग्रुप को इन्होंने टैकल करना है, टारगेट करना है, वो अब इनकी दस्तरस से बाहर है. Because as you can appreciate, peer pressure and peer support requires people at the same level, more or less. And I'm very concerned that our current lady health workers are now in some instances beyond the age group where young women or adolescent girls take them seriously. Secondly, wo jo ho jata hai complacency with sarkari naukri, their efficiency has gone down. And certainly we are seeing a lot of non-resident lady health workers. We are seeing a lot of ghost lady health workers. So actual program coverage jo hai over time, rural areas में जहाँ 70% के करीब होता था, वो अब घट के तकरीबन 40-50% रह गया. कॉस्ट ऑफ लेडी हेल्थ वर्कर क्यों बढ़ी है? कॉस्ट इसलिए बढ़ी है कि लेडी हेल्थ वर्कर एक ज़माने में स्टाइपेंड पे शुरू हुई थी. वो 2-3-4 हज़ार रुपये उनकी स्टाइपेंड होती थी. अब वो रेगुलराइज एज एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट हो गई हैं. उनको 18 से शायद 23 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है और वो फुल टाइम एम्प्लॉई होते हैं. ठीक है, वो 30 घंटे ही काम करती हैं, लेकिन उनको फुल टाइम एम्प्लॉय. उसकी वजह से कॉस्ट वो बहुत हो गई है. So the lady health workers can have an impact. They can impact maternal health, child care, pregnancies, contraception, and also information about other things like TB, HIV, etc. But has it had across the country impact? No, it hasn't. Has this impact been sustained? No, it hasn't. So let's go back and look at it. Why? सप्लाईज़ की हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि जी लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो जा तो रही है, लेकिन उसके पास देने को दवाई नहीं है, कॉन्ट्रसेप्टिव नहीं है. दैट इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम. नॉट ऑलवेज इज़ इट बिकॉज के जी पैसे नहीं हैं. पैसे होते भी हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग स्लो है. हमें दवाइयाँ वगैरह भी मिलती रहें ताकि हम इलाके में लोगों को दवाइयाँ भी फराहम करें. और कार्ड रजिस्टर वगैरह हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपने पैसों से बनवा रहे हैं. ये भी हमें देना. उनको सप्लाईज नहीं मिलती हैं बर वक्त, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बर वक्त नहीं मिलती हैं उन्हें, उनके कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का कोई हिसाब किताब नहीं है. सो एंड जो वो डेटा कलेक्ट करती है जो हाउस होल्ड लेवल पे अपनी कम्युनिटी को, उसको वो देखता भी नहीं है. She needs training, she needs skilling, she needs materials. Now in the age of social media and the easy access that people have on telephones, there are many ways that the lady health worker can be provided the necessary information. I do think that there's some things that she's being asked to do which could be peripheral and should not be. There's always a full set of responsibilities. And my worry for many years and many decades has been that, if you ask the lady health worker to do too many things, they're going to lose sight of what a central function is. So I still think that it should revert back. It should be reset. It should be refocused, which Sindh is doing, by the way. I think Sindh has probably got the most effective training program for LHWs for family planning. They're training her in the multiple different options for contraception.
They're training her and equipping her with all the necessary information that you need to convey to a newly married couple. Promoting delayed first birth, promoting spacing between children, promoting mother's health and child health, immunization, and so forth. All of these are things that promote smaller families and better health and safer pregnancies. So she needs to be continuously trained. And don't forget, there's always attrition. And now the women who became LHWs in 1993, all of them are not there. And if some of them are there, they're children. And, you have to be trainable also. So you have to be more educated today. The LHW has more significant responsibilities. हमें सिर्फ ट्रेनिंग देंगे कि सेहत के बारे में, हर बीमारी के बारे में ट्रेनिंग हर 6 माह के बाद हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए. गवर्नमेंट के चाहिए कि हर 6 माह के बाद हमें ट्रेनिंग दें. इसके अलावा हमें सहूलतें दें. साहब आप कुछ रूल्स बना लें. Government of Pakistan, governments are all about rules, right? And to large extent rules follow हो जाते हैं. आप रूल ये कर लें कि आपने सप्लाईज नहीं ख़त्म करनी. ये चीज़ें तो सैक्रोसैंक्ट हैं, दवाएं मौजूद होनी चाहिए. अच्छा, एक और चीज़ जो हमारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव में जो बहुत बड़ा मसला हमेशा रहता है ना, कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स ख़रीदते हैं और हमारे पास इतने होते हैं, वी रन आउट. या तो महंगे होते हैं या बाइंग में प्रॉब्लम होती है. NGOs have to go through government and so on so forth. उनको हर दफ़ा हर कंसाइनमेंट के लिए नई इजाज़त लेनी पड़ती है. इसका एक बड़ा सिंपल इलाज ये है कि आप कुछ चीज़ों को इमरजेंसी की, सो पॉपुलेशन इमरजेंसी हम पूरे वक्त इस्तेमाल करते हैं. इफ़ पॉपुलेशन इज़ एन इमरजेंसी तो मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकम इमरजेंसी ड्रग्स. अगर वो हो जाते हैं तो लीगली, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, उनके लिए ना ड्यूटीज़ होंगी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी, उनके लिए एक्स्ट्रा इजाज़तें नहीं लेनी पड़ेंगी, और वो आप किसी भी मुल्क से इंपोर्ट कर सकते हैं. वीव ऑल टॉक्ड अबाउट कि जी कुछ सेफ गार्डेड बजट्स होने चाहिए, वो नहीं हुआ है. आपने जब हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो कि जी वो एक टास्क फोर्स और उसकी रिकमेंडेशन, वन ऑफ द बिग वंस वाज कि एक सेफ गार्डेड बजट हो जो फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए. वो नहीं हुआ है. मे बी दैट समथिंग टू टॉक अबाउट कि जी एक एंडाउमेंट फ़ंड बना दिया जाए गवर्नमेंट के, वो हर गवर्नमेंट में ये फुटबॉल ना शुरू हो, एक दफ़ा सारी पार्टीज़ बैठ के एक एंडाउमेंट फ़ंड क्रिएट कर दें जो आप यूज़ कर सकें स्पेसिफिकली सिर्फ दवाएं ख़रीदने के लिए. You need to get to the woman. The woman is in the household. You need to get to a woman when she's on a reproductive age group. There's an interesting sort of, aspect of that. How do you reach out to women who are not yet married so that they have the necessary information in order to make the right decisions after they get married? So when they have babies, decisions about childbearing, pregnancies, spacing, and so forth. And therefore, I think the lady health workers focus on housing, the females of the household. The children of the household is critical. She cannot be distanced from them. The LHW program actually creates also a health home in the village. Every LHW's home also is designated own room as equipped and prepared and funded by the government, with all the charts and information and so forth that is required. And that is the health house. So I would not change that design. I would definitely try and see if there's a possibility, and I think there is, of better referral facility. So if a woman is studying, she's in a critical condition, she's about to have a baby, and it takes her 45 minutes to an hour at least, and through very difficult roads and terrains to get to a clinic. We need to address that. So training of what is the community of the midwives in that village is critical. The lady health worker cannot work alone. She has to work
with the midwife, with the community health worker, with other workers that are addressing their issues as that. So if there are water and sanitation issues, in a sense, she has to be involved, because water-borne diseases are taking the lives of our children. So the overall health indicators of a one in a family, the other family members, the larger picture is critical for her to address. I would bring in this sort of cluster of the additional areas that she needs to work on. And she can't be an expert in everything. But she actually is that agent that is present in the village, in the community, and can, as I said, knock on the door, and the door opens if the family gets in. That's very important. The other thing is that the district level data collection, decision-making, evidence-based decision-making, and also importance of devolved authority and making the position of the dairy health supervisor actually effective and possible. Otherwise, the LHW is working pretty much on her own. She's working without any support, sufficient support. So some of these changes, but I think there are several others. I would bring in civil society, definitely. If there are effective organizations there and they belong to civil society, why should they not be formed? Obvious चीज़ ये है कि देखें कुछ जगह पे आप अर्बन मॉडल्स करेंगे शहरों में, ठीक है, 30% ऑफ पाकिस्तान लिव्स इन अ पुअर अर्बन सेटलमेंट, जो कि विल्सन सेंटर की स्टडी ने दिखाया था 2014 में. वर्ल्ड बैंक की 2015 की रिपोर्ट लेवरेजिंग अर्बनाइजेशन में भी कुछ इसी तरह के नंबर्स आते हैं. तो आप वहाँ पे probably the government probably can actually even fund private sector organizations, NGOs and whatnot to do services. And वैसे भी हमने यही देखा है कि जनरली स्पीकिंग LHWs जो होती हैं वो रूरल हैं, अर्बन कम ही हैं कम है. सो अगर एक्सपेंशन करना है लेडी हेल्थ वर्कर का, आप अर्बन में ना करें, वो आप NGOs को दें जो कि वो चीपली मोर इफेक्टिवली कर सकते हैं. आप ले जाएं लेडी हेल्थ वर्कर को उन जगहों पे जहाँ पे और लोगों की एक्सेस नहीं है. सो रिमोट रूरल एरियाज़ हैं जो जहाँ पे कोई और नहीं जा रहा है, जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर मौजूद नहीं है. पहली बात तो ये कि the transaction cost of that is high, and you cannot and you should not absolve the state from its responsibility for primary care. Just the fact that state is finding it difficult for a variety of reasons, political and governance, to implement a primary care program, you cannot devolve it to NGOs and others because that transaction cost goes up. हमारे पास सामने अफगानिस्तान की मिसाल है. गुज़श्ता 20 साल में अफगानिस्तान का जो मॉडल है वो NGOs का मॉडल है. अब वो सर पीट रहे हैं इस वक्त बिकॉज 20 साल में वो अपना प्राइमरी केयर निज़ाम बना नहीं सके हैं जिसको कि हुकूमत कह सके कि हमारा प्राइमरी केयर निज़ाम. यही पाकिस्तान है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में आप बड़ी अच्छी तरह चला रहे हैं अपने प्रोग्राम. उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है जहाँ कि आपको कहते ना इस चीज़ की ज़रूरत पड़े कि आप 5-20 कहते ना NGOs को गुजार लें. बाकी प्रोविंसेस हमारे ऐसे हैं कि जहाँ एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल्स हैं. मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे प्राइमरी केयर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स मच मोर एट फैसिलिटी लेवल, at particularly secondary and above care. Tertiary should be largely in the hands of the private sector and some government hospitals because of its resource requirements and the capital investment required. This is the way the models work. But primary care is generally never devolved to non-state entities because primary care में कई चीजें जो शामिल हैं वो हुकूमत की जिम्मेदारी है. Immunizations, साफ पानी, sanitation, nutrition, safe childbirth, postnatal care, ये चीजें आप प्राइवेट सेक्टर को क्यों देना चाह रहे हैं? देखें, primary responsibility does not mean that they're going to provide services. The government should not be in service delivery business to begin with. Government can be a funding agency. दुनिया में यही होता है कि अक्सर सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर में सोर्स आउट कर दी जाती हैं. गवर्नमेंट पैसे दे रही होती है लेकिन कर वेस्ट में, अफ्रीका में
चर्च ऑर्गेनाइजेशन बेतहाशा इस तरह के काम करती हैं, स्कूल्स भी चलाती हैं, ऑर्फनेजेस भी चलाती हैं, ये भी हस्पताल भी चलाती हैं, पैसे गवर्नमेंट से आते हैं, ठीक है, दैट्स अ रोल यू कैन प्ले. सर्विस डिलीवरी में आप करना, आई मीन देखें, सर्विस डिलीवरी इज़ वेरी हार्ड. आपको हर रोज़ हर चीज़ के ऊपर नज़र रखना, ये करना वो करना. यूजुअली पर्टिकुलरली जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें सीनियर ऑफिशियल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी टेन्योर बहुत कम होती है, वो साल भर से कम उमूमन लीडरशिप रहती है. गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इज़ नॉट डिज़ाइंड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर दैट रीज़न. देयर इज़ अ पॉलिटिकल इकॉनमी देयर. जब तक आप वो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं हैंडल करेंगे, उसको नहीं रिफॉर्म करेंगे, आप वहाँ पे सर्विस डिलीवरी के रिजल्ट्स नहीं आएंगे. सिंथ इज वन प्रोविंस जहाँ की डेवोल्यूशन के बाद ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का भी काफी रुझान आया है. और आपने देखा है कि जहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉल के थ्रू, पीपीएचआई की मैं मिसाल दूंगा. आई मीन गो के उस मॉडल में भी मुझे इख्तलाफ है इन द सेंस के आई थिंक दे कुड डू अ लॉट मोर ऑन द प्रिवेंटिव साइड देन जस्ट ऑन द क्यूरेटिव साइड. बट जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर ने इदारे संभाले हैं, चाहे ठेके पे या किस तरह, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की मैं मिसाल दे रहा हूँ, दे हैव टेकन ओवर मेनी ऑफ द इमरजेंसी सर्विसेज. आप देखिएगा वो परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई है. एक इनिशिएटिव था सुख के नाम से, कराची में कई साल चला, आई थिंक 2019 तक चला, 5 साल 6 साल. उन्होंने क्या किया कि एक कुछ टाउनशिप्स में लेडी हेल्थ वर्कर के साथ में कोलैबोरेशन की, और उस अरसे में लेडी हेल्थ वर्कर्स के ऊपर इनके कोऑर्डिनेटर होते थे. दे वुड बेसिकली, सैलरीज वही गवर्नमेंट की जा रही थी, वो था ये था, सप्लाईज भी गवर्नमेंट से ही आती थी, मैनेजर इनकी तरफ से होता था. तो दे वुड मेक श्योर कि अगर सर्विसेज नहीं हो रही हैं तो उसको एड्रेस करें. एंड उसकी अच्छी एवेलुएशन नहीं हो सकी बिकॉज दैट एवेलुएशन वाज नेवर डिजाइन्ड इनटू दैट इंटरवेंशन. लेकिन इट क्वालिटेटिवली कम से कम ये बड़ा वाज़े लग रहा था कि काम बेहतर हो रहा है, लोग खुश थे, लेडी हेल्थ वर्कर खुश थी बिकॉज उनकी एम्बिग्विटी कम हो गई थी, उनकी इज्जत बढ़ रही थी. दे वर हैप्पी कि जी उनको बड़ा क्लियर असाइनमेंट मिल गया है कि जी इधर आज की तारीख में हमने इधर जाना है, उस तारीख में उधर जाना है. दे वर डूइंग स्टाफ, उनकी चीज़ें हो रही थी, लोग उनसे बड़ी इनकी बेसिकली इज्जत बन रही थी. दैट वुड बी अ मॉडल कि प्राइवेट सेक्टर, आई मीन हेल्थ फैसिलिटीज़ में तो अब कॉन्ट्रैक्टिंग आउट हो रही है, एंड फ्रॉम ऑल आई कैन टेल उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं. वो लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए भी कर सकते हैं. आप लेडी हेल्थ वर्कर्स को रिमोट लोकेशंस पे ले जाएं, वहाँ पे थोड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें ताकि हमें बलूचिस्तान में आप एक लेडी हेल्थ वर्कर से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक दिन में 50 किलोमीटर चलेगी तो वो तो नहीं होने वाला, राइट. आपको फिगर आउट करना पड़ेगा जो स्पेशल असाइनमेंट से इससे उससे कि वो कैसे उसको करें. मे बी आपको उसको कोई ट्रांसपोर्ट देनी पड़े जो उसके साथ में चले, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, those kind of thing. But then withdraw from where somebody else can do something. जहाँ पे आप withdraw करते हैं वहाँ पे सर्विसेज ख़त्म ना करें, वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दें. सो एक जगह आप फंडिंग एजेंसी हैं, दूसरी जगह पे आप सर्विसें हैं वही गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट. आई थिंक दैट वुड बी अ इंटरेस्टिंग मॉडल टू टेस्ट. एंड ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज यू हैव थॉट इफ द आइडिया, या मैंने कोई सजेस्ट कर दिया है किसी और एक्सपर्ट ने, डज नॉट मीन कि इट्स गोइंग टू वर्क. उसको टेस्ट करें. आपको नतीजे तो टेस्ट किए बगैर एंड रिपीटेडली टेस्ट किए बगैर नहीं हो सकते. I think all these years it's been very prescriptive that either you're just a community health worker funded by government, but through, the development side of the budget, and or you become part of a government service. These two alternatives should not have been the only alternatives. I think that there were ways of looking at it. I would suggest that for provincial governments to create a strong district level entity which is responsible for the continued
supervision and monitoring of the performance of the lady health worker, not just the lady health supervisor. Let me explain to you how it's structured right now. You know, the health sector has multiple programs. Under the health department, you have a program for TB, immunization, expanded program of immunization for HIV, AIDS, and so on and so forth. There are about 8 or 9 vertical programs like that. Lady health workers is a vertical program. Now, with this vertical program, what happens is that at the district level, there's some program officer, but he reports to the program director, who sits either in Hyderabad or Karachi. The district itself does not have much decision-making authority. I think that the citizens' involvement, the village committee's involvement, and the decision-making needs to be devolved to the district. And there has to be a very strong cadre of management of the lady health workers at the district level. That's very important. देखिए मुशर्रफ के ज़माने में एक चीज़ उन्होंने की थी जो गलत implement हुई थी, but idea was very good, which was basically district level governance, right? And what we need right now is similar district level accountability and district level oversight and governance. हमारे अपने प्रोजेक्ट में जो मैं आप जिस बात कर रहा हूँ, उम्मीद है नौ जो भी खत्म हुआ है, उसमें जो एक बड़ा अहम लेसन ये है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आप हेल्थ अथॉरिटीज को, जो भी उनकी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मॉनिटरिंग टीम है, प्लानिंग टीम है, ट्रेनिंग टीम है, उसको यकजा करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे प्रोग्राम्स को, तो आपको नताइज मिलेंगे. एंड इफ डिस्ट्रिक्ट्स देन बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग देयर ओन परफॉर्मेंस, उससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं. सो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है कि कराची सब कुछ कंट्रोल कर सकता है या हैदराबाद सारे शहर को कंट्रोल कर सकता है, हमें भूल जाना पड़ेगा. I think what we need to do is to strengthen the district health processes, appoint district oversight groups, look at accountability at the district level and incentivize it. और उस incentivization में ये है कि जिन districts की performance बेहतर होगी, उन districts को अब ज्यादा वसाइल दें, ज्यादा resource दें, support करें उन्हें. और जहाँ performance ठीक नहीं है, वहाँ उनको technical support दें कि performance क्यों नहीं है ठीक. और उन बुनियादी मसाइल का अजाला करें जिन वो बुनियादी मसाइल का शिकार हैं हम. I mean, सिंध के कई दही इलाकों में, as the government knows very well, our basic challenge is कि human resource exists on paper, but it is not there actually on the ground. I mean, जो आधे लोग हैं भी, वो अगर सुबह सरकार का काम करते हैं 12-1 बजे तक, फिर वो प्राइवेट हो जाते हैं, या फिर हफ्ते में आधा वक्त जो है वो they are in the bigger cities doing their private practice. And district health officers should be aware of this, and sometimes they are aware of it and in cahoots with them. So ये गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना. लोकलाइजेशन मेक्स अ डिफरेंस. कहीं पे आपको लेडी हेल्थ वर्कर नहीं मिलेंगी, वी टॉक्ड अबाउट दैट. वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ पे आपको कुछ और मॉडल्स करने पड़ेंगे. आई थिंक आपको इस तरह की लोकलाइजेशंस वो उसी वक्त होगा जब आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स या सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स आर एम्पावर्ड, उनके हाथ में बजट्स हों, उनके हाथ में उनकी कमोडिटी सप्लाईज हों. Political parties have to recommit themselves to better health, to deliver better health care, better health services, and ensure that every single household is reached. So it's a political commitment to put to them manifestos. And I would be really so encouraged if manifestos of all the political bodies included it and improved, revamped, strengthened, supported LHW program, but just by an MHW program. Mm-hmm. This is an interesting point that you raised on the political development. Because if you look at many programs in Pakistan, when there's a change of government, many programs are sacrificed. They're identified with the previous government, and it's unfortunate. The continuity isn't there. In the LHW, it's probably one of the few programs in this entire country that every single government has continued, has supported. So it is a national program. It is a program that is reasonably well constructed, and it has delivered. So it is owned. It is owned by the governments and by every party. And it's a very, very powerful instrument for health care for all. And I think that if you want to hear this from them, they should have it in their manifestos. I think they do. Pragmatically and practically, the
problem is at this stage, لوگوں میں اتنی خاص طور پر ہماری جوان نسل میں اتنی ڈسپونڈنسی آئی ہوئی ہے کہ people have frankly lost faith in the political process and the political system. So a lot of people are disengaged right now because they don't quite see the value of doing anything. At the same time, there's not a single politician out in the streets who is able to fire the imagination of the people or put a manifesto forward, جس کو آپ manifesto کہہ سکتے ہیں کہ جی میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں میں یہ کروں گا. And I'm being very blunt and honest about this. So therefore, we have a challenge in front of us. We probably need to work with those who are not necessarily dependent on political change. I'm talking about the technocrats, the technical machinery of the government. I think at this point in time, I would much rather advocate, as we are trying to do, with the technical folks who are in the ministries and departments of health. Go ke I realize کہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی جس کی بھی ہو یا جس کی بھی ہو جس صوبے میں، سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی یہ ٹرانسفرز اور تبدیلیاں کریں گے, which is their only weapon that they have. So my sense is we have to keep trying, and we have to keep trying through a process of engaging people on the basis of science and evidence. ناظرین, یہ تھا اصلاحاتی جائزہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام پر. امید ہے جیسے کہ ہماری کوشش رہی کہ اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو. ہم نے ضرور بہت کچھ سیکھا. یہ پروگرام 30 سال سے چلا آ رہا ہے اور یہ بڑا واضح ہے کہ انتہائی مؤثر اور فعال پروگرام ہے یہ, جو اکثر ہم حکومتی پروگراموں کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتے, لیکن اس میں بہت سارے جو ہے ملک کو, عوام کو, مملکت کو فوائد پہنچے ہیں. لیکن جس طرح ہر چیز جو ہے اس پیمانے پہ, خاص طور پہ اتنا بڑا پروگرام, اس میں بہت گنجائش ہے بہتری کے لیے. تو جیسے جیسے یہ آنے والے سال میں سیاسی اور دیگر تبدیلیاں آتی ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک بہت بڑا اصلاحاتی عمل تھا اس میں مزید اصلاحات لائے جائیں اور اس کو مزید مؤثر اور فعال اور بہتر بنایا جائے. آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ, اور امید ہے انشاءاللہ اگلے اصلاحاتی جائزے میں بھی آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اور اپنے ویوز سے ہمیں آگاہ کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.